So in this video we are going to discuss about starting air explosion, and you can see here I have depicted here with a diagrammatic representation of starting airline. Okay, you have some safeties also here. This is bursting disc, you have non-return valve. Okay, this is slow turn valve. These are interlocks for main engine, that is turning gear interlocks, and these I have already covered a video on these receivers requirement. Okay, you can watch that. These are HP stage and LP stage, screw down on return valve. These are relief valves, so relief valves, drain, okay, bursting disc, okay, and distributor, one pilot valve per cylinder. So non-return valves, slow turn valve, these are the different safeties. Now, why does this starting airline explosion occur? It occurs during the start sequence. Whenever there is a start sequence, these explosion occurs. Now, when the oil which can accumulate in the air start receiver, there has to be oil. So, accumulate in the air start receiver or on the surface of start airline. Now, this can be in start air on the surface of start airline becomes entrained with high pressure air in the air start manifold and ignited. So, what happens? Oil वहाँ पे accumulate हो जाता है, and after that what happens? कि become entrained with high pressure air. वहाँ पे high pressure air तो already available है, और वो क्या होता है, उसकी वजह से वो ignite होती है. Now, the source of ignition for these explosion can be attributed to the following reasons. अभी ignition का source कहाँ कहाँ से होगा, ये सारे reasons हम यहाँ पे discuss करेंगे. A leaking air start valve when the engine is running, when the engine is running, the hot gas is produced as the fuel burns in the cylinder. अभी अगर एक लीकिंग एयर स्टार्ट वाल्व होगा व्हेन द जब इंजन चल रही है, द हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड एज द फ्यूल बर्न्स, क्योंकि हॉट गैसेस प्रोड्यूस होंगे जब फ्यूल बर्न होता है सिलेंडर में एट अबव 1200 डिग्री सेल्सियस. लीक पास्ट अ वाल्व विच हैज नॉट रीसीटेड करेक्टली. लीक पास्ट हो सकता है वाल्व से, जो कि अगर वो सीटिंग का प्रॉपरली नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लीक पास्ट होगा. There is blow past and there is leak past. These are different things. Now the branch pipe of the air start manifold heats up to the red hot. Branch pipe जो होता है इसका, ये red hot में heat हो जाएगा. If the engine is stopped and restarted, अगर engine को stop कर दिया जाए और फिर restart किया जाए, before the pipe has time to cool, any oil vapor in the air can be ignited and an explosion can result if the mixture of oil or air is correct. Okay. Now फ्यूल, अब दूसरा कारण क्या हो सकता है, फ्यूल लीकिंग इनसाइड द सिलेंडर. अगर फ्यूल लीक होगा सिलेंडर में व्हेन द इंजन इज इन स्टॉप्ड कंडीशन, तो इसीलिए तो हम लोग ब्लो थ्रू करते हैं कि एनी लिक्विड व्हिच इज entrained so that that can just move out, because liquid, as you know, it is incompressible. When the engine then undergoes a start sequence and builds up speed, the fuel which has been leaked into the cylinder vaporizes. अब जब जो फ्यूल लीक हुआ वहां पे वो क्या होगा, वेपराइज होगा. मैं ऑलरेडी फायर पे एक वीडियो कवर किया क्लासिफिकेशन ऑफ, उसमें मैंने बोला है कि द सब्सटेंस डजंट burn, द बिकॉज ऑफ हीटिंग द सब्सटेंस प्रोड्यूसेस द वेपर एंड इट्स द वेपर दैट बर्न्स. तो सब्सटेंस कोई बर्न नहीं करता है, उसका वेपर बर्न करता है जो वो सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है. ओके. As the piston ring ignite the fuel, when the air start valve open, as the piston comes over the TDC, the pressure inside the cylinder is higher than the air start pressure, and the burning combustion gases pass to the air start manifold, igniting the all entrained in the air. Okay, now the main cause of explosion in starting air manifold of the marine engine is probably the auto ignition. So ये auto ignition जो होता है वो main cause होता है of the oil deposited in the inner surface of the manifold, not backfire from cylinders as previously thought. तो जो backfire हमने पहले डिस्कस किया वो उतना मेन कारण नहीं होता जितना कि auto ignition होता है. Now auto ignition condition occurs because of the high temperature produced by rapid inflow of the high pressure air. This incoming air compressor the air downstream of the main starting valve, leading its temperature to reach as high as 400 degrees Celsius, which is in some cases causes the oil deposits in the manifold to self-ignite, leading to an explosion. Now, to minimize the risk of explosion, the oil carryover from the compressor should be reduced to minimum. अभी ये जो oil carryover है, इसको minimum करना चाहिए हमें. Okay, now class regulation required that air compressors air intakes are located in an oil free atmosphere. Air compressor जो होता है वो oil free atmosphere में located होता है, इसलिए हम लोग हमेशा drain करते हैं और auto drain भी होता है. And a drain filter for
Septing oil or water mist is installed between the compressor discharge and the air receiver. There must be a complete separation of compressor discharge and starting air supply to engine at the receiver, which is installed with a drain and a relief valve. I showed you in the diagram the drain और relief valve होता है उसमें. The air start system must be protected with a non-return valve at the starting air supply to each engine. This is generally part of automatic valve which opens when an air start is initiated. Okay, it is clear I think. In addition to ice requires that, अभी यहाँ पे requirement क्या क्या है? For direct reversing main engine, greater than 230 mm bore flame arrestor or bursting disc are required for each cylinder. Each cylinder में अगर उसका 230 mm से ज़्यादा bore है तो flame arrestor और bursting disc वहाँ पे होना चाहिए, fitted with the cylinder start air and the manifold. For non-reversing and auxiliary engine जिसका 230 mm bore, a single flame arrestor, ठीक है ना, सिंगल फ्रेम से, तो ये रिवर्सिंग मेन इंजन का और नॉन रिवर्सिंग ऑक्सिलरी इंजन का फ्रेम अरेस्टर और बर्स्टिंग इज एक्सेप्टेबल फिटेड एट द सप्लाई इनलेट और स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड. ऑल्दो नॉट पार्ट ऑफ आईसी रिलीफ वाल्व may be installed to the manifold where flame arrestors are used instead of bursting disc. Relief valve भी हो सकता है instead of bursting disc. Now unsatisfactory practices which have led to the explosion in the air start system include telltales drain at each end of the starting air manifold found to have been blanked off with the screwed plugs. Failure to drain the starting air receivers and starting air pipes at regular interval or before maneuvering. Drain अगर हम नहीं करेंगे तो ये होता है. Failure to check the leaking air start valve. Now, failure to maintain starting air valves and systems strictly in accordance with the manufacturer's recommended practices. Failure to maintain fuel valves correctly. अगर fuel valve हमने correctly maintain नहीं किया तो इसके वजह से ये है flame arrestor in the diagrammatic. The flame trap is manufactured from the brass or the aluminium alloy, which both have a high specific heat capacity. तो ये alloy का होता है किससे? Brass और aluminium alloy. So many holes are bored. इसमें देखते हैं कितने holes सारे bored हैं. To this thick circular form to enable the air to pass through it. They are installed in the main airline immediately before the air start valve to restrict the risk of flame in the cylinder propagating back to the main start manifold by dissipating the heat energy in the flame. ये क्या करता है? Heat energy को dissipate करता है. तो ये है हमारा flame arrestor. Now we talk about bursting disc. Now जब हम bursting disc की बात करते हैं, the safety cap consisted of a bursting disc enclosed by the perforated cylinder and a perforated cover in top to protect any bystanders in the event of burst. Now the cover is installed with a telltale which shows if the bursting disc has been damaged. इसके पास एक telltale देखिए आप है, तो अगर bursting disc damage हो गया, if the bursting disc of the safety cap is damaged due to the excessive pressure in the starting air line, overall or replace the starting valve which cause the burst and mount a new disc. तो इसमें क्या करेंगे, हम नया डिस्क एक लगा देंगे अगर ये burst हो गया because safety valve के malfunctioning की वजह से लाइन हम क्लीन करके. If a new disc is not available or cannot be fitted immediately, then the cover can be turned in relation to the perforated cylinder in order to reduce the leakage of the starting air. Cover को हम turn कर सकते हैं perforated cylinder के हिसाब से. Okay, now relief valve. तो ये है हमारा relief valve. Now that a relief valve is installed in the air start manifold of the Sulzer RTA two-stroke engine. Its purpose is to relieve excess pressure in the air start manifold. It consists of the spring-loaded valve disc which locates on a mating seat which is bolted to the end of the air start manifold. When the force exerted on the disc due to the excessive pressure is greater than the spring force holding the valve closed, the valve will open. Okay. अभी जो हमने डिस्कस किया उसको हम समराइज कर लेते हैं कि स्टार्टिंग एयरलाइन एक्सप्लोजन ऑन शिप्स. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्टार्टिंग एयरलाइन एक्सप्लोजन? इफ वी टॉक अबाउट द मेन कॉज ऑफ स्टार्टिंग एयरलाइन एक्सप्लोजन, लीकिंग स्टार्टिंग एयर वाल्व और जैमिंग एट द पोजीशन ऑफ द वाल्व. लीकिंग स्टार्टिंग एयर वाल्व होगा या फिर जैम हो जाएगा. इनिशियली द ऑयल विच इज डिस्चार्ज फ्रॉम द एयर कंप्रेसर टू स्टार्ट एयरलाइन सिस्टम, इट विल डिपॉजिट एज अ थिन मॉइस्ट फिल्म ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द पाइप बट नॉट रेडली टू कंबशन. ये क्या होता है, जो भी कंप्रेसर से ऑयल डिस्चार्ज होगा और वहाँ पे क्या होगा, जाके थिन फिल्म से वो डिपॉजिट हो जाएगा बट वो कंबशन के लिए नहीं होगा. इफ स्टार्टिंग एयर वाल्व लीक्ड और जैम्ड एट ओपन पोजीशन, हॉट गैस और फ्लेम में एंटर. अगर वो वाल्व प्रॉपरली सीट नहीं होगा तो हॉट गैस ये हो जाएगा जो लीक पास्ट हमने डिस्कस किया था, और फ्लेम में एंटर था स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड. उसकी वजह से क्या होगा, फ्लेम होगा या फिर लीक पास्ट हॉट गैसेस जाएंगे स्टार्टिंग एयर मैनिफोल्ड में. वेपराइज द ऑयल, ऑयल को वेपराइज करेगा एंड सेट द फायर टू ऑयल मिस्ट एंड ग्रीजी मैटर्स विच जनरली डिपॉजिट ऑन द सरफेस. एट
At that condition, mostly arrival first start of for maneuvering time, high pressure compressed air coming into contact with the fire and may cause explosion. और ये high pressure air उसके contact में आएगा vapor के और फिर उसकी वजह से explosion हो जाएगा. How to prevent starting air line explosion? Regular overhaul and maintenance of starting air valve. Starting air valve का regular overhaul और maintenance करना है हमें. Before departure, test the air starting valve leakage. इसका leakage test करना है हमें. Regular drain of air bottles, drain valves, drain valves जैसे कि हम सर्विस टैंक को ड्रेन करते हैं, एयर बोटल्स को भी हमें ड्रेन करना चाहिए. रेगुलर ड्रेन ऑफ एयर स्टार्टिंग सिस्टम को भी रेगुलर ड्रेन करना है. रेगुलर क्लीनिंग ऑफ कंप्रेसर सक्शन एयर फिल्टर एंड यूज ऑफ ऑयल वेटेड सक्शन फिल्टर. Feed minimum absolute cylinder lubrication to the compressor. What are the safety devices on starting air line? सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या है? स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व और बर्स्टिंग डिस्क. इफ बर्स्टिंग डिस्क फिटेड, नो नीड ऑफ रिलीफ वाल्व. अगर बर्स्टिंग डिस्क होगा तो रिलीफ वाल्व की जरूरत नहीं है. फ्लेम ट्रैप एट द जॉइंट वेयर मैनिफोल्ड टू ईच सिलेंडर स्टार्टिंग लाइन. नाउ starting air line drain valve, inlet of automatic air starting valve. Now turning gear interlock, reversing interlocks. So these are there. How to test starting air valve leakage of main engine on ship? कैसे हम टेस्ट करते हैं जब इंजन रनिंग कंडीशन में है? तो by hand touch feeling to an adjacent pipe to the valve while in the engine is operating. hand touch से हम feel करते हैं उसको. If leak, we can feel the pipe hotter than other. अगर leak होगा तो pipe hot होगा. Okay. When engine stopped, जब engine stop condition में होगा, shut the isolating valve of the starting air distributor. All indicator cock must be open. Disengage the turning gear. Open the main air bottle stop valve. Set the control lever to starting position. Check all the indicator cock. Escape of air through indicator cock will. So starting, it should be replaced immediately. Write a note on bursting disc arrangement on main engine. When the starting airline explosion occurred, bursting disc burst out of safety tube. The outer hood can be moved round just far enough to blank off the hole in the inner hood, thus preventing air leaks when the engine continue using air. It is only used for emergency and the bursting disc should be renewed as soon as possible. The detector fixed to the safety cap will be bent out at the explosion and it tells at a glance विच डिस्क हैज बर्स्ट. कौन सा डिस्क बर्स्ट होगा, वो बेंड होगा, उसकी वजह से हमें आइडेंटिफाई कर लेंगे. वाटर बर्स्टिंग डिस्क मेंटेनेंस ऑन शिप. फॉर रेन्यूएबल टाइप रिन्यू आफ्टर कंप्लीट रनिंग आवर्स. फॉर रीयूजेबल टाइप अनीलिंग मस्ट बी डन. अनीलिंग मस्ट बी डन. अभी ये अनीलिंग जो है, अनीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग क्या होता है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया हुआ है. और डिफरेंस बिटवीन अनीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग, दैट ऑल्सो वी हैव कवर्ड. सो टुडे वी हैव कवर्ड कि what is starting air line explosion, what are the different safeties that we have in starting air system, that is by the bursted disc, flame arrestor, or whatever is the safety, and why this is occurring. Okay, what are the requirements and how do we can prevent the starting airline explosion. So this is the drain that we were talking about. This is the relief valve, screwed down non-return valve. This is slow turn valve. This is turning gear interlock. This is the bursting disc that we are talking about. This is non-return valve. Okay, distributor, one pilot valve per cylinder. Okay, so these are the different safety arrangement. Okay, all together. Thank you so much.